ब्राह्मण के घर में. So he took birth in the Brahmana family, and he remembered his previous lives, and so he was very careful that he wouldn't get into Maya again, that he wouldn't fall down this time. तो जब उन्होंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, तो पहले के सब जन्म भी याद, और वो बहुत सावधान रहे कि इस समय इस जन्म में वो माया में नहीं फंसे. So he pretended to be dumb. That's why it's called Jada, right? He pretended he was a stupid person. He would do everything wrong. तो इस जन्म में वो ऐसा बर्ताव करते थे कि जैसे वो मूर्ख हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति की तरह बर्ताव करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा जड़ भरत. वो ऐसी चीजें करते थे, सब गलत करते थे. Why did he do everything wrong? Because he thought, if I do everything right, the Father will become too attached to me. तो वे क्यों सब चीजें गलत की? क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं सब कुछ सही करूंगा तो मेरा पिता मुझसे आसक्त हो जाएगा. If the father has a son who is very clever, very smart, and if he's always doing well in the college and everything and getting good marks in the school, the father's very proud. This is my son. He's number one in the class. He's going to this college. He's got this thing. Your father feels very proud, And so Jadbarat didn't want the father to be proud of him. तो अगर हम देखते हैं किसी पिता को एक संतान है, वो बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छे विद्यालय में जाता है, उधर क्लासरूम में फर्स्ट आता है, नंबर 1 आता है, तो पिता आसक्त हो जाता है. वो ये मेरा बच्चा है, ये तो फर्स्ट आ रहा है. तो इस प्रकार से आसक्ति हो जाती है. इसलिए जड़ भरत बिल्कुल गलत और मूर्ख की तरह कार्य करते थे ताकि उनका पिताजी से उनसे कोई आसक्ति ना रहे. Jad Bharat is playing the fool. And that's why the father is thinking, oh, my son, he doesn't take a lot of attention to his son because he thinks he's stupid. His son is not right in the mind, so he doesn't take a lot of interest in him. तो इसलिए जड़ भरत मूर्ख की तरह बर्ताव करते हैं बिल्कुल, और इनका पिता सोचता है वो ये मेरा बेटा मूर्ख है, शायद इसका मानसिक हालत सही नहीं है वो, तो इसलिए उनका पिता उसमें कुछ रुचि नहीं रखता. So this way Jad Bharat could wander around freely without being entangled in the family affairs. इस प्रकार जड़ भरत आसानी से घूम सकते थे बिना ये पारिवारिक झमेले में फंसने के. But it happened that as he was wandering around, there was this one king, Maharaj Rahugana, and he was going to a holy place actually. He was going to Gangasagar, he was going there to do some pilgrimage in the holy places, and he was on the palanquin, riding in a palanquin. He was the king, and he had a palanquin, and one of his carriers of the palanquin had got injured, so he needed another man to carry the palanquin. तो एक बार ऐसे हुआ, ऐसे भटकते हुए जड़ भरत जा रहे थे, तो उनको मुलाकात हुई एक राजा के साथ, राजा रघुगढ़, जो कोई पवित्र स्थान पे जा रहे थे और वो पालकी में जा रहे थे. जो व्यक्ति उनका पालकी उठा के जा रहे थे उसमें से एक को चोट लग गई, तो लोग ढूंढ रहे थे इसके बदले में कोई और मिले को पालकी उठाने के लिए. So he happened to see this Jad Bharat, and he saw he's a big strong man, he's tall and strong. He looks a little stupid, the hair is all everywhere. He's not very well dressed. He doesn't look very intelligent, but he looks big and strong. So he thought he can carry my palanquin. He can be one of the carriers. फिर उन्होंने जड़ भरत को वहां देखा और उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, लंबा चौड़ा है, और फिर भी मूर्ख के जैसा लग रहा है, जैसे कपड़े नहीं पहना हुआ है, बाल पूरे बिखरे हुए हैं. तो उन्होंने सोचा चलो ये शारीरिक रूप से भी अच्छा है, तो इसी को मेरा पालकी चलाने में ये काम आ सकता है. And Jad Bharat's not speaking anything. He's just playing dumb, He's not saying anything. He's doing what you might call monavrat.
he's not speaking anything to anybody. And so Jada got enrolled to carry the palanquin, and the Maharaj Rahugan's on his palanquin. Jadbarat's one of the carriers. But when they're carrying it, Jadbarat's very careful. He doesn't want to step on any of the insects on the road. तो इस प्रकार से जड़भरत कुछ बोल रहा नहीं है, बिल्कुल चुपचाप बैठा है और ऐसे ही वो मूर्ख की तरह लग रहा है, लेकिन पालकी उठा के चल रहा है, चुपचाप है बिल्कुल। लेकिन वो बहुत सावधान रह रहा था कि रास्ते में कोई भी कीड़े मकोड़े हो उन पे वो पैर नहीं रखे। इस सावधानी से इस प्रकार पालकी चला रहा था। So Jadbarat's carrying the palanquin, but you know, it moving around a bit, shaking a lot. And Maharaj Rahugan's in the palanquin. He's saying, "What's going on? What's happening? Hey, you walk properly." इस प्रकार हिल रहा है ताकि उसका पैर कोई कीड़े मकोड़े में नहीं पड़े। तो पालकी ताकि हिल रहा है, डोल रहा है। तो पालकी में महाराज राहुगन बैठ रहे हैं। वो बोल रहे, ओ क्या हो रहा है, आप ऐसा क्यों हिल रहा है, बराबर से पालकी चलाओ। So Jadbarat, he doesn't pay much attention. And again they walk more, and again the same thing happens. And the king gets angry, and he stop, and he gets up and he says, "Listen, you walk properly, I'll have you whipped. I'll whip you if you don't walk. Do your job properly." वो चलते हैं तो फिर भी वो जड़भरत हिल रहा है, डुल रहा है, अभी तक पालकी ऐसे ही चला रहा है। अभी महाराज रघुगणा को गुस्सा आता है, वो पालकी से नीचे उतरते हैं, बोलते हैं, तुम बराबर चलो, सीधे से चलो, मेरा पालकी सीधे से चलाओ, नहीं तो मैं तुमको कोड़े से मरवाऊंगा, सीधे से चलो। Then Jadbarat began to speak to the king, and he said, "You are thinking you're the king, and you're thinking I'm your palanquin carrier. You don't know who you are. You don't know who I am. You're thinking you're the king. We're all your servants. You don't know actually what is your actual position. Who were you before you took birth? Where were you? Where was I before I took birth here? You think I'm just here to carry your palanquin? You think you can just beat me because I carry your palanquin and the way you don't like?" तो फिर जड़भरत उस पे दिव्य बातें करने लगते हैं। तो बोलते हो, तो तुम सोचते हो कि तुम राजा हो और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे पालकी चलाने वाला हूँ। तुम जानते नहीं हो तुम कौन हो। ये राजा शरीर के पहले तुम किधर थे तुमको मालूम नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं किधर था तुमको मालूम है, और तुम सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो। तुम इस प्रकार वो उससे बात करने लगते हैं। You don't know there's one supreme master over everyone, and we're all servants. Our duty is to serve the one supreme Lord. You're not the Lord of everything. You're not the master of everyone. You're just also a servant of the supreme Lord. वो बोलते हैं आपको पता नहीं है, हम सबका एक परम प्रभु है, एक मालिक है, एक प्रभु है, और हम सब उसके दास हैं, और हम हैं उसकी सेवा करने के लिए। आप सोच रहे हो आप प्रभु हो, नहीं, हम सबके एक प्रभु हैं और हम उनके सेवक के लिए हैं, लेकिन आप अपने आप को प्रभु सोचो। So Jadbarat went on to speak enlightening knowledge to Maharaj Rahugan. Maharaj Rahugan was shocked. He was thinking this man was just some uneducated Sudra, but he realized he was a very great self-realized soul. So Maharaj Rahugan asked him, he said, "Where did you get all this knowledge from?" तो इस प्रकार जड़भरत उससे दिव्य ज्ञान की बात करने लगे, और महाराज रघुगण आश्चर्य में हो गए ये सुन के। उसे तो लग रहा था ये कोई मूर्ख है। तो जब ये ऐसे बात कर रहा था, महाराज रघुगण आश्चर्य में हुए और उनसे पूछे, आपको ये सब दिव्य ज्ञान किधर से मिला? And Jadbarat told him, "You don't know, there's only one way you get this. You have to take, you don't get it by just doing austerities. You don't get it just by cultivating knowledge. You don't get it just by going to holy places. You have to take the dust from the feet of the pure devotees and take it all over your body."
उसने कहा, ओ आपको पता नहीं है ये दिव्य ज्ञान एक ही जगह से प्राप्त हो सकता है, ये तपस्या करने से प्राप्त नहीं हो सकता है, ये पढ़ने से प्राप्त नहीं हो सकता है, ये धाम जाने से प्राप्त नहीं हो सकता है, ये प्राप्त हो सकता है जब हम शुद्ध भक्त का चरण का धूलि प्राप्त करें, तो ही ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। And in this way, Bharata went on to enlighten Maharaj Rahugan about the goal of life and about what is actual spiritual knowledge. और इस प्रकार जड़भरत महाराज रघुगन से आगे बात करने लगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है. So Prabhupada is giving this example about Jada, that how from his previous life he progressed. So we understand life is a journey. तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी जड़ भरत का उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे पहले जन्म से उन्होंने आगे प्रगति की. तो यहाँ हम समझ सकते हैं हमारा जो पूरा जीवन है ये एक प्रकार की यात्रा है. We come together for some time and we move on. We go. We don't know where we'll go, where who we'll be with, or where we'll go. But life is all part of this journey. This is just one part of the journey. This life is just one part of that journey. And the ultimate destination is that we all want to go back to Godhead. इस प्रकार से ये जीवन एक यात्रा है. हम लोग यहाँ कुछ समय के लिए आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन इसके बाद हम आगे जाते हैं, कोई और आगे जाता है, हमको पता नहीं हम कहाँ जाते हैं. तो इस प्रकार से ये छोटा सा हिस्सा ही है इस यात्रा का, और इस पूरी यात्रा का जो परम लक्ष्य है या परम गंतव्य है वो है वापस. So we say this body is karma kshetra. It's a field of karma, the field of fruitive activities, and the activities which we do will determine the body we take in the future. हम कहते हैं ये शरीर जो है ये कर्म क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से हम जो कर्म करेंगे वो फैसला करेगी हम कैसा शरीर आगे जाके लेंगे. Kshetra means the field. Just like farmer has a field, he will plant different. Maybe he'll plant rice, or he'll plant wheat, or he'll plant flowers, or whatever he's going to grow. And according to the seeds he plants, he will harvest those things. क्षेत्र का अर्थ एक है खेत. जैसे कि जो किसान है वो खेती बाड़ी करता है, और जिस हिसाब से वो खेती बाड़ी करता है खेत में, उस प्रकार के फूल या जो कुछ फल सब्जी जो उगती है, जिस प्रकार से वो खेत में काम करता है. So now we're also preparing this body by the work, the activities, the thoughts we have in this body will determine the type of body we'll take in the future. तो हम भी अभी एक और शरीर की तैयारी कर रहे हैं, जो जिस प्रकार के हमारे कार्य हैं इस शरीर में, जिस प्रकार के हमारे सोच विचार हैं इस शरीर में, वो तय करेंगे किस प्रकार का शरीर हम आगे लेंगे. And Lord Krishna in the seventh chapter he described, no, fourth chapter he described that if we understand how Lord Krishna's birth and activities are all transcendental, then when we give up this body we never have to take birth again. और चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हम समझते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म कर्म दिव्य हैं, तो ये शरीर छोड़ने के बाद हमको दूसरा शरीर नहीं लेना पड़ेगा. So that is the perfection of yoga. Upon giving up the body, you don't take another material body, but you go to be with Krishna. ये योग का परम सिद्धि है कि ये शरीर छोड़ने के बाद हम दूसरा भौतिक शरीर नहीं लेंगे, सीधा कृष्ण के पास जाएंगे. So Srila Prabhupada tells how both his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati, and Srila Prabhupada himself were born in devotee families. And so from their childhood they had the opportunity to practice Krishna consciousness. तो श्रीला प्रभुपाद जी उसके बारे में और उनके गुरु श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के बारे में बताते हैं कि कैसे वे दोनों का जन्म एक भक्तों के परिवार में हुआ था, और उन्हें पहले से ही ये अवसर प्राप्त हुआ था कि वो जल्दी से ये भक्ति के कार्यों में जुड़ जाए. Srila Prabhupada said he never forgot Krishna in his life. In his life he never even tasted tea. श्रीला प्रभुपाद ने कहा कैसे वो अपने पूरे जीवन में कभी कृष्ण को नहीं भूले, और
पूरे जीवन में उन्होंने कभी चाय चखी भी नहीं थी. And Bhaktisiddhanta Saraswati, his spiritual master, he was born the seminal son of Bhaktivinoda Thakur. और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है वो शारीरिक रूप से पुत्र बने थे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के. So Bhaktivinoda Thakur trained Bhaktisiddhanta Saraswati to preach. He trained him. He taught him the Bhagavad Gita when he was a young child, and he taught him different languages, and he had him trained in all the philosophies. शुरुआत से ही भाषाओं में विभिन्न विभिन्न प्रकार के तत्व हैं उनमें बचपन से ही उनको शिक्षित किया. The Bhaktisiddhanta Saraswati would travel with Bhaktivinoda Thakur. When Bhaktivinoda Thakur was there in Jagannath Puri, Bhaktisiddhanta Saraswati was there with him as his son. He was there with his father. So he was constantly hearing Bhaktivinoda preach, and he was also preaching himself. Bhaktivinoda Thakur ji, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur को साथ में लेके जहाँ भी भ्रमण करते थे जाते थे तो वो अपने पिता के साथ ही रहते थे. जैसे जब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में थे तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी वहां थे और वो देख रहे थे उनके पिताजी वहां प्रचार करते थे. इस प्रकार बहुत जल्दी से ही उनको भी प्रचार कार्य के विषय में पता था. And just like our Srila Prabhupada's father had him trained to play the mridanga when he was a little child. जैसे कि हमारे श्रीला प्रभुपाद जी के पिता ने पहले से ही उनको शिक्षित किया था मृदंग बजाने के विषय में जब वो एक छोटे से बालक थे. And when Prabhupada was a young man, there was a plan to send him to England to become a lawyer. But his father said, no, I don't want my son to go there. और जब प्रभुपाद जी एक युवक थे तब ऐसी योजना बन रही थी कि वो लंदन जाए और वकील बने, लेकिन शिला प्रभुपाद के पिता ने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ मेरा बेटा वहां जाए. Prabhupada's father said, I don't want my son to become that kind of man. He should stay here in India, and he should. And in this way, Prabhupada said his father was a pure devotee of Krishna. His father had small business, simple business, cloth business, but he said every night he'd come home, he'd worship the deity. And when guests would come to their home, which they almost did every day, his father would ask them to bless his son, to bless Abhay Charan Bhaktivedanta Swami. Please bless my son, that he will become devotee of Radharani. और जब मेहमान आते उनके घर में जो हर रोज आया करते थे, उन मेहमानों को कहते आप मेरे बेटे अभय चरण को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी का एक अच्छा भक्त बने. So that kind of birth, to get birth in that kind of family, is because of the previous life, because he had good samskars in the previous life, so he could take birth into that family of devotees. तो इस प्रकार के घरों में जन्म मिलना ये पहले के संस्कारों के वजह से होता है, पहले की भक्ति के वजह से होता है. इस प्रकार से उनको ऐसे उच्च भक्तों के परिवार में जन्म मिलता है. And then it's very easy for that soul, for that child to grow up and become a nice devotee in Krishna consciousness. और फिर एक अच्छा अवसर मिलता है उस बच्चे के लिए, उस आत्मा के लिए कि वो आगे प्रगति करे कृष्ण भावना. So life is a journey. We are sowing the seeds for the next life, for the next birth, by this life. इस प्रकार जीवन यात्रा है. इस जन्म में हम आगे के जन्म के लिए कुछ बीज डाल रहे हैं और वो फिर फलित होते हैं. So we want to sow the seeds that we will also have nice Krishna conscious practice in the future. तो हम इस प्रकार के बीज होना चाहते हैं कि भविष्य में भी हमको अच्छा कृष्ण भावना भावित वातावरण प्राप्त हो.
One time in the West, there was this very famous musician. His name was John Lennon, and he had a Japanese wife named Yoko Ono. And so Prabhupada was, at that time, we had no place in England for the temple. So John Lennon had allowed the devotees to stay at his place. And Prabhupada also came to stay there. एक बार लंदन में एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार था, उसका नाम था जॉन लेनन, और उसकी जापान की पत्नी थी Yoko ओनो उसका नाम था। तो एक बार भक्तों को वहां पर लंदन में रहने के लिए सही स्थान नहीं था, तो जॉन लेनन के घर प्रभुपाद और भक्त के रहे थे। So they understood Prabhupada to be a very powerful person in spiritual practice, and they approached him with a request. वे पति पत्नी समझ पाए कि प्रभुपाद जी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत उन्नत है, तो उन्होंने एक विनती की प्रभुपाद जी से। And they told Prabhupada, they said, we want you to bless us that next life we can be also husband and wife. उन्होंने प्रभुपाद को कहा, हम चाहते हैं आप हमको आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में भी हम ही पति पत्नी बने। And Prabhupada said, no, I cannot give that blessing. प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता। That's foolish. Next life, he said, you don't know where you'll be. You cannot, don't think because now you're husband and wife, next life you'll also be. Said, no, it's not like that. प्रभुपाद ने कहा, ये बहुत उल्टा का आशीर्वाद है, मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि अगले जन्म में आपको किसी को मालूम ही नहीं आप कहाँ होंगे, पत्नी कहाँ होगी, ऐसा सब आशीर्वाद मैं नहीं दे। And that man, John Lennon, he got murdered a few years later. और जो व्यक्ति था जॉन लेनन, कुछ साल बाद उसकी हत्या हो गई। In the streets of New York. न्यूयॉर्क के सड़कों पर। So, anyway, Prabhupada said, actually said this man, he said previous life he was also a musician, and that's how he became a famous musician in that life. प्रभुपाद जी ने कहा, ये व्यक्ति पहले जन्म में भी इस प्रकार का कलाकार ही था, और इसलिए ये जन्म में भी वो कलाकारी उसकी जारी है। So you can see there's a journey going. Everyone's on a journey, and it depends how we use this life, where we will take the next birth, what will happen. इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जीवन एक यात्रा ही है, तो हमको ये देखते हैं कि जिस प्रकार से हम ये जीवन लेंगे वो तय करेगा आगे कैसा जन्म मिलेगा, कुछ जीवन में तो करेंगे। Okay, are there any questions? Putra, we take the father from the planet. That Kriya, what we do with the Shraddha Kriya, every year we have. So, like for the devotees, I mean, just little dual thing. They're not fully this thing too, but should we perform that with the Karmakandi Brahmana, or what is your Prabhupada didn't think we needed. Prabhupada didn't think we need. That you're doing devotional service, you don't need to do that. There was one man, one devotee, actually it was His Holiness Bhakti Swarup Damodar. He's from Manipur. And so he was a scientist. He did his PhD in California, and he was with Srila Prabhupada in Los Angeles. And he got a message that his father had passed away over in Manipur. So he said, Srila Prabhupada, I have to go back to India to do the last rites for my father. But Prabhupada said, no. He said, you've finished with that. You don't need to do it. प्रश्न है कि आपने कहा कि पुत्र जो है वो पिता को नरक से बचाता है, तो जो हम श्राद्ध का कार्य करते हैं कर्मकांडी ब्राह्मणों के साथ, तो क्या हमें करना चाहिए? महाराज ने कहा नहीं, क्योंकि अगर हम भक्ति में हैं तो
आवश्यकता नहीं है। महाराज को उदाहरण दिया कि स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज जो मणिपुर से थे, तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और वो भारत से ये समाचार मिला, तो उन्होंने शिला प्रभुपाद को कहा मुझे भारत जाना होगा। तो शिला प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, उन्होंने कहा मुझे भारत जाना है अंतिम क्रिया करने के। शिला प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, आप इस सब से खलास हो चुके हो, आप अभी भक्ति के कार्य हो, आपको वापस नहीं जाना। Of course, that time Bhakti Siddhanta, Bhakti Swarup Damodar, he was a brahmachari and went on to be a sannyasi. So for brahmacharis and sannyasis, these things are not required. But for people who are in the grihast, then you can do these things. And you can do them according to the Vaishnava rites. There's Vaishnava mantras which you can do for performing the shrine. महाराज कह रहे हैं कि बेशक उस समय हिज होलिनेस भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज वो ब्रह्मचारी थे और आगे जाके वो सन्यास दिए, तो लेकिन हम में से जो गृहस्थ आश्रम में है वो इस प्रकार के श्राद्ध कर सकते हैं, परंतु जो वैष्णव संस्कृति है उस हिसाब से। But if you're fully in Krishna consciousness, then you don't have to do these things. Yeah, these rituals, karma kandi rituals, are not for people who are fully engaged in bhakti. परंतु अगर आप पूरे रूप से कृष्ण भावनामृत में हो तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ये कर्मकांडीय नियम है ये उनके लिए लागू नहीं है जो पूरी तरह से भक्ति में जुड़े हैं। But like I say, you can do according to Vaishnava rites. You don't have to do karma kandi. जैसे मैंने कहा, आप इस सब को वैष्णव तरीके से कर सकते हो, कर्मकांडी तरीके से करने की जरूरत नहीं। Yes, any other question? प्रश्न है? कृष्ण कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, एक्टिविटी में कोई टेस्ट जन्म में नहीं कर पा रहे, पूरा कोशिश कर रहे हैं, तो अगला कोई टास्क मिलेगा क्या? किसी को मिलेगा जो किसी भक्ति पूरी नहीं हो पाती, भक्ति पूरी नहीं हो पाती। Maharaj's question is, you said that what activity we do in this body, according to that we get the next birth, and we are trying to do spiritual activities. We like to do kirtan and only spiritual activities, but somehow due to a situation we cannot fully do only spiritual activities. So what kind of chance will we get ahead? Well, whatever you do it for Krishna. It's not that you only just hear and chant and just do bhakti yoga, but there's also karma yoga. You do karma yoga, and karma yoga is working for Krishna. Just like Arjuna. Arjuna is fighting on the battlefield at Kurukshetra, and he's fighting and killing people. But Krishna's told him to do it. तो ऐसा ही नहीं है कि हम केवल भक्ति मतलब हम केवल भगवान का नाम जप करेंगे और सुनेंगे हर समय बैठ के, नहीं, हम जो कुछ भी करें वो कृष्ण के लिए हम कर सकते हैं। जैसे अर्जुन का उदाहरण है, वो कुरुक्षेत्र की भूमि में लड़ रहा था, लेकिन वो भी कृष्ण के लिए। You can do karma yoga, you see. Karma yoga is working, offering the results of your work for the service of Krishna. आप कर्म योग कर सकते हो, जिसका अर्थ है अपने कार्यों का जो परिणाम है उसको आप कृष्ण को अर्पित कर सकते हो। And bhakti yoga is you've given everything to Krishna. Nothing is yours. भक्ति योग का अर्थ है आपने सब कुछ कृष्ण को दिया है, आपका कुछ भी नहीं है। So bhakti yoga is on the very top. भक्ति योग सबसे ऊपर है। But we can do karma yoga, and karma yoga will bring us to the bhakti. परंतु हम कर्म योग भी कर सकते हैं, उस भक्ति पे दिया है। Krishna
Krishna says in the Bhagavad Gita, Yat karoshi, yat ashnasi, yat jahosi dasi, yat tapashyastu kuntiya, tat kurushva mad arpanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer and give away, whatever austerities you perform, do it as an offering to me. भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यज्ञ करो यज्ञ दस्मति यज्ञ तपस्या बोलते हैं तत्पुरुषो मदर्पण कि आप जो कुछ करते हो जो कुछ खाते हो जो भी आप तपस्या करते हो या जो भी फल का त्याग करते हो वो सब आप मेरे लिए करो और ऐसा करोगे तो आप मेरे पास आओगे. And Krishna also says in the 3rd chapter of Bhagavad Gita that work should be done as a sacrifice for Vishnu. Otherwise it binds you to the material world. So perform your duty for his satisfaction and remain unattached and free from bondage. और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 3रे अध्याय में भी कहते हैं कि जो भी काम करो वो आप एक प्रकार का विष्णु के लिए यज्ञ करते हुए था. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो काम हमें इस भौतिक जगत में बांध देता है. So Krishna doesn't tell anybody to give up your work. Krishna wants you to work. You have to work. We have to be active. It's better than to stop work. Much safer is to work, but work for Krishna. भगवान कृष्ण कभी नहीं कहते अपना काम छोड़ दो. काम छोड़ना, काम करना, काम छोड़ने से ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए ज्यादा बेहतर है काम करते रहना, काम छोड़ने से. लेकिन जो भी करते हैं तो वो कृष्ण के लिए करते हैं. Try to give up work and just, then you get problems. So many yogis got problems giving up work and avoiding work. It's much safer to work, to be active, but be active in the service of Krishna. Do it for Krishna. तो अगर हम काम छोड़ेंगे तो वो एक समस्या बन सकती है. बहुत सारे योगियों को परेशानी हुई, मुश्किल में फंसे काम बंद करके. तो इससे अच्छा हम काम करते रहें, जो भी करें वो काम कृष्ण के लिए करें. You have a family, you have to work, you have to maintain them. परिवार है, आपको काम करना होगा, उनको पालन करना होगा. Keep them in Krishna consciousness. कृष्ण भावना में रखना होगा. At home you have a nice altar, and when you cook food you offer it on the altar. घर में अच्छा मंदिर है, अब जब आप खाना पकाते हो वहाँ भगवान को भोग लगाओ. And you wake up in the morning, you chant Hare Krishna, do japa. सुबह उठते हो, हरे कृष्णा जपो. Don't eat meat, fish, and eggs. Don't take any intoxication. Don't gamble like that. Live a nice, clean, pure, honest life. मांस, मच्छी, अंडा नहीं खाओ, जुआ इत्यादि मत करो और इस प्रकार से अच्छा स्वच्छ शुद्ध जीवन बिताओ. And hear the Bhagavad Gita regularly. Discuss it with the devotees. और नियमित रूप से भगवद गीता सुनो और इसके विषय में बातचीत करो भक्तों से. And this way your life will be very good, very Krishna conscious. इस प्रकार से आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत कृष्ण भावना भावित होगा. Krishna doesn't want people to give up their work. कृष्ण नहीं चाहते हैं कि लोग अपना काम छोड़ दें. He's telling Arjuna, fight, stand and fight, right? That's better than to give up work. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं खड़े हो और लड़ो, वो काम छोड़ने से बेहतर है. Understand? Krishna tells Arjuna, even you die on the battlefield, that's glorious. It's a glorious death. To go on the battlefield, to the Kshatriya dies on the battlefield, that's glorious. It's very good. कहते हैं अगर आप युद्ध में मृत्यु होती है वो बहुत यशस्वी मृत्यु है. अगर क्षत्रिय लड़ते हुए मरता है बहुत ही यशस्वी मृत्यु. But if you die sitting in front of the television, that's not very good. अगर आप
टीवी के आगे बैठते हुए मर गए, वो अच्छा नहीं। तुरंत दुनिया का के नाम पे कभी कैसे बात कर रहे हो is asking, when will Chaitanya Mahaprabhu's prediction that the whole world will become Krishna conscious come true, and how are devotees doing it, and how, with what speed devotees should do it? Really? Did Lord Chaitanya predict the whole world would become Krishna conscious? क्या चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कहा कि पूरी दुनिया कृष्ण भावना भावित होगी? I think what he did say, he said the holy name would be spread to every town and village. That doesn't mean everyone will become devotee. उन्होंने कहा कि भगवत नाम का प्रचार हर नगर आदि ग्राम में होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया भक्त बन जाएगी। There are two kinds of people. There's the devotee, and there's the demon. Devi Sampat, Asurik Sampat. दो प्रकार के व्यक्ति हैं, भक्त और असुरी, देवी संपत और असुरी संपत। So the devotees, yeah, there will be more devotees. This is the golden era. After Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared, that begins the golden era for 10,000 years in the Kali Yuga. So Lord Chaitanya began the golden era, the Kali Yuga. तो बेशक और भक्तों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्वर्णीय युग है, ये और 10,000 वर्षों तक स्वर्णीय समय चलेगा, जो चैतन्य महाप्रभु ने शुरुआत की थी। Kali Yuga will go on for 427,000 years. कलयुग 4,27,000 सालों तक चलेगा। And so there's only 10,000 years the golden age. After the golden age is over, then it will be Kali Yuga. और केवल 10,000 वर्ष स्वर्ण युग हो गए, और ये 10,000 वर्ष पूरे हो गए, फिर केवल कलयुग रहेगा। But golden age doesn't mean everybody will become devotee. स्वर्णीय युग का मतलब नहीं है हर कोई भक्त बने। But we're seeing more people take to the chanting of Hare Krishna. पर हम देख रहे हैं और लोग हरे कृष्णा में जुड़ रहे हैं। There's a question, Guru Maharaj, on chat. Vaishnavani Mataji. My father-in-law passed away 3 years ago, but my husband doesn't have much faith in doing any rituals. Should I insist to do? My question is, should I insist to do the yearly rituals for my father-in-law? Not necessary. I think you're hearing, Mataji. So Maharaj is saying it's not necessary. No, necessary. Vaishnavi Mani, you just chant Hare Krishna and be a good devotee, and your father-in-law will get most of something. तो आप महाराज कह रहे हैं वैष्णवानी माताजी को आप अच्छे से जप करो, एक अच्छी भक्त बनो, और आपके ससुर को भी उसका लाभ मिलेगा। Prahlad Maharaj was worried about his father because his father was so demonic. He tried to fight with Lord Nrsimhadev, tried to kill Lord Nrsimhadev. Of course, Lord Nrsimhadev killed him. But Hiranyakashipu was such a demon, Prahlad was worried about his father going to hell. But Lord Nrsimhadev told Prahlad, you don't have to worry because you're a devotee, so all your family members are delivered for many generations. तो प्रहलाद महाराज को भी चिंता थी उनके पिता की, वो इतने राक्षस असुरी स्वभाव के व्यक्ति थे। वो तो भगवान को मारना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनको मार दिया, लेकिन वो इतने असुर थे, और प्रहलाद महाराज को उनके पिता की बहुत चिंता थी। तो भगवान नरसिम्हदेव ने कहा, आप तो कुछ चिंता नहीं करो, आपका तो 21 पीढ़ी तर गया है।
Yes, Mother, you want to say something? Prabhuji, thank you so much for your time and Guru Maharaj. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Yes, brother. Vaishnavas to pray for your forefathers. Well, yeah, you can request. You can pray yourself. You want to request others to do it for you. Actually, you should do it yourself. Pray for them. प्रभु पूछ रहे हैं कि आप वैष्णव को कह सकते हैं हमारे पितरों के लिए प्रार्थना करो, तो महाराज कह रहे हैं कि हाँ आप कह सकते हो, लेकिन उससे बेहतर है आप दूसरों को कह रहे हो प्रार्थना करो, आप खुद उनके लिए प्रार्थना करो. Yes, bro. Maharaj, sorry. I mean, Lord himself did Shraddha. So, or some people may ask when we do say like this. So, even Lord Krishna did come did. So, how do you? He did what? Shraddha. How do we? Lord Krishna did Shraddha for who? Never heard Lord Krishna did Shraddha. When Kamsa was killed, Lord Krishna organized the cremation. After he killed Kamsa, Mathura. I think you're saying during the war was going to begin, Mahabharat war. So he started. They're saying if we tell other people like you shouldn't do Shraddha, and then sometimes they say, well, Lord Ram and Lord Chaitanya did, so how we explain them? Did they do Shraddha? They did last rites. They did the funeral. I never heard they did Shraddha. They did the last rites. Like when Jatayu died, Lord Rama did cremation for Jatayu. He did that for Jatayu. I didn't hear about doing any. When Krishna killed Kams and the wrestlers also in Mathura, Lord Krishna made sure they did everything for the funeral. But that's not Shraddha. That was just the last rites, but that's for their departure. महाराज कह रहे हैं भगवान राम ने भी जटायु के मरने पर, या हम सुनते हैं कृष्ण ने भी कंसा के लिए और जो वहां पर कुश्ती लड़ रहे थे उनकी मृत्यु हुई, तो भगवान ने उनके लिए श्राद्ध नहीं किया, उनकी जो अंतिम क्रियाएं थी वो की, और अंतिम क्रिया हो वो देखा, लेकिन श्राद्ध का वर्णन नहीं. People die, you have to do some funeral, you do some cremation. That's necessary. लोग मरते हैं तो कुछ अंतिम क्रियाएं करें, वो करना आवश्यक है. Whenever a devotee departs, after a devotee departs, well, then we do a Smriti Sabha. Smriti Sabha, like 3 days or 5 days, 7 days after their departure, we'll have a program. We'll invite everyone and make nice prasadam. And at that time also we will speak about the devotee, about what we remember about them. Speak something good about them. तो जब कोई भक्त शरीर छोड़ देता है, हम लोग उस भक्त के लिए स्मृति सभा करते हैं. 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का ऐसे स्मृति सभा चलती है, जिस समय उस भक्त ने क्या क्या अच्छी सेवाएं की, क्या कार्य किए हैं, उनके बारे में बोलते हैं और उस भक्त का गुणगान करते हैं. But I never heard any. No, some people come, they want to do Shraddha, and they'll do something. There's some pujaris there in the temple, they'll do something, they'll make some arrangement to do some, according to Vaishnava mantra, they can do it if they want, people want.
कोई लोग श्राद्ध करना चाहते हैं तो इस प्रकार मंदिर आते हैं, वहां पर उपस्थित जो पुजारी हैं उनसे वैष्णव संस्कृति के हिसाब से कुछ श्राद्ध इत्यादि काम करते हैं. After somebody departs, it's also customary to do some kind of charity, donate to the temple with their name, or you donate a cow to the temple on behalf of that person, or you give some brahmanas Bhagavad Gita, or you give cloth, kapri dan, shastra dan, these things. इस प्रकार से जब कोई शरीर छोड़ देता है तो उसके परिवार वाले वहां के दान करते हैं, उनके हिसाब से कुछ दान देते हैं. कभी कभी कोई लोग भगवत गीता दान करते हैं या कपड़ों का वस्त्र दान करते हैं. सभी का धन्यवाद. हरे कृष्णा. हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा महाराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. समावेत भक्त वृंद की जय. गौर प्रेमानंद.